Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your Scientist C examination. So this is part 6 of the series currently going on at my channel. So if you are a new viewer, you can subscribe my channel, and if you find it useful, you can hit the like button also. So in this video, I will be providing you the cheat sheet, right? The cheat sheet from where questions will be asked in your examination. So stay tuned and don't forget to hit the notification bell because you will be notified whenever I will upload the video. So without further delay, let's start the video. So first question is related to the relationship that involves the exchange of nutrients between two different species for their mutual growth is called. Now see, there are certain terminologies which you have to remember while solving any question, right? So the relationship that involves the exchange of nutrient, it means they are helping each other in between two species, species A and species B. And in the second part of the question, it is written that for their mutual growth. And we know that in the mutual growth, both the organisms are benefited, equally benefited, right? So this will not be a antagonism, because in the antagonism, one is harmed, right? One is neutral and one is harmed, right? Commensalism means one is neutral and one is positively benefited. Parasitism, no, it is syntrophism. In syntrophism, organism mutually help each other, ठीक है, for their better survival in an ecosystem. So right answer is syntrophism. So what is syntrophism? It is also known as syntrophy or cross feeding. It is a biological phenomenon where two or more metabolically different organisms cooperate to perform a metabolically function that none of them alone can do. So this is mutually helping, right? Because both A and B cannot do it on an individual basis. So both they interact and they share their nutrition, right? Second question. Which one of the following bacteriophages has a genome composed of single stranded circular DNA? ठीक है, जीनोम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं डीबीटी में. सो हियर इज लाइक चीट शीट कि वेट यस, जीनोम से रिलेटेड देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन डीबीटी. सो चीट शीट के पहले टॉपिक में आप लिख दो कि यू हैव टू कवर ऑल द जीनोम, be it a RNA, single stranded RNA. See, the genome can be DNA or RNA. So both these can be single stranded and double stranded. Single stranded, double stranded, right? So you have to take care in your notes that you will have to write that this particular organism is made up of this particular genome. So you have been asked that it is composed of single stranded circular DNA. So this is phase lambda 174. Now here I have included the table so that it will be easier for you to remember it, right? So there are some viruses that infect the vertebrates. So the first category is related to DNA viruses with envelope and DNA viruses without envelope. So in this DNA viruses with envelope, we have pox viruses and we have herpes viruses, right? So if you are having a question that is related to name the DNA viruses with envelope, and you are having option pox viruses, adenoviruses, papoviruses and parvoviruses, so you have to choose the pox viruses because its genome is enveloped, and in this one adenoviruses, papoviruses and parvoviruses, it is non-enveloped. So pox viruses, the disease caused by them is smallpox, cowpox, monkeypox, right? So they have double stranded DNA. And herpes virus is known for cold sores, herpes simplex type 1 and genital herpes, a sexually transmitted disease, right? So apart from that, chickenpox and shingles are also the example of herpes virus. EPV, that is the causative agent of Burkitt lymphoma, so they also have double stranded DNA. Now DNA viruses with no envelope includes adenoviruses, papoviruses and parvoviruses. So see, parvoviruses has single stranded DNA, unlike the adenoviruses and papoviruses. Both these have double stranded DNA. Here you can see. So adenoviruses cause
respiratory tract disorder, right? Sore throat, tonsillitis, conjunctivitis, gastrointestinal disorders, and papavirus is responsible for human warts, several degenerative brain diseases. So you have to remember that whether it is single stranded or double stranded, one question will be from here, right? So next one is RNA genome, right? So RNA viruses with envelope and RNA viruses without envelope. So here is one more category, right? DNA may be the enveloped, non-enveloped. Likewise, RNA may be enveloped and non-enveloped. So in RNA viruses with envelope, you are having toga viruses, orthomyxoviruses, paramyxoviruses, rhabdo, corona, flavivirus, filoviruses, bunya virus, retroviruses, right? So here you can see all these have single stranded RNA. I am not reading it out what are the disease caused by them, like toga viruses cause rubella, German measles, common name. Orthomyxovirus is responsible for influenza. Paramyxovirus is responsible for rubella, right? So RNA viruses without envelope includes picorna viruses and reoviruses, right? So only reoviruses are the viruses with, with no envelope or without envelope, you can say. So these have double stranded RNA rather than single stranded RNA, right? So always try to remember the odd one out. सबका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए याद नहीं रख पाओगे, so it is better to remember the exception case, right? Now, which of the following is an insect cell line? HEC 293, SF9, DH5 alpha, CHO. So see, this type of question is frequently asked in DBT. ठीक है, so this is also important for your scientist examination. So इनमें से कौन सा है जो insect cell line है? HEC 293, it is not a insect cell line. In fact, it is a human embryonic kidney. HEC 293, right? So SF9 is a cell line that is a type of insect cell, right? And DH5 alpha is a E. coli cells, which is engineered, right? Uh, to maximize the transformation efficiency, we use the DH5 alpha cells. Now Chinese hamster ovary cells, ठीक है, CHO ये है. So ये क्या है? It is derived from the ovary of the Chinese hamster. So again your answer is SF9. Now, which one of the following is a basic principle of Sanger DNA sequencing? एक question आपको sequencing से देखने को मिलेगा, be it Sanger sequencing or else the automated sequencing part, the next generation NGS. NGS is again important. So which of the following is the basic principle? So basic principle Sanger sequencing का क्या है? Dideoxy termination method. Dideoxy यानी कि जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के अलावा वी हैव डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. So the right answer is chain termination by incorporation of dideoxynucleotides. Now next question. An element that is present in a nucleotide but not in a nucleoside is आँख बंद करके phosphorus. ठीक है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए. Krebs cycle is a anabolic, catabolic, amphibolic, pyogenic. So what is it? So you यहाँ से cheat code एक और दे देती हूँ मैं. You have to memorize the metabolic pathway, right? Be it a glycolysis, Krebs cycle, etc. You have to remember both. Now see, Krebs cycle is an amphibolic pathway. ठीक है, amphibolic pathway क्यों है? Because it involves both anabolic and catabolic. Anabolic क्या है? The TCA cycle generates precursor, तो ये anabolic हुआ. Now it oxidizes the acetyl group to produce CO2 and a DH and FADH2. So catabolic भी है. So that way it is both. Now all pseudogenes do not code for a protein with original function, protein with altered function, RNA with coding sequence, RNA with regulatory function. So what is a pseudogene and what is the function of the pseudogene? So basically pseudogen अगर बोल रहे हैं, so ये original function वाला protein तो बना ही नहीं सकता. So it will not code for a protein with original function, right? So these questions are very 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 important. Now one more question. So I always recommend my student to practice from the match the following format question, because from these question you will be getting how many questions? 4 different separate questions, right? 4 individual questions can be asked, like Chagas disease, trypanosomiasis, leishmaniasis. So you have to remember all these things, right? So this Chagas disease is caused by, इनमें से देखो approach क्या होना चाहिए?
जो आपको पता है उसको पहले पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता होगा जो लेशमैनियासिस है, ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय द वेक्टर, ये वेक्टर है कॉलम 2 में सारे ही। सो दिस लेशमैनियासिस जो काला जार डिजीज कराता है, सो उसका जो वेक्टर है वो है सेटसी फ्लाई, ठीक है। तो आर का होगा फर्स्ट, तो आर का, ओ सो सॉरी, इसका होता है ये, लेट मी रेस, माय बैड, मुझे बोलते वक्त ही लग रहा था। सी, लेशमैनियासिस का जो वेक्टर होता है दैट इज सैंड फ्लाई, राइट। सो ये इसका वेक्टर हुआ। नाउ अब ऑप्शन देखो, आर का 3 किस में दिया हुआ है, यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है, तो ये हमारे कट गए ये दो ऑप्शन 50%। नाउ सी, इनमें से किसी एक का पता लगा लो, येलो फीवर। सो येलो फीवर इज द वेक्टर, causative vector for this yellow fever is what, the mosquitoes. So S का 2 कहाँ है, यहाँ है, अगेन यहाँ है। So you have to find out one more. Chagas disease is caused by, like कौन सा इसमें वेक्टर रहता है, रेडोविड बग, ठीक है। सो P का 4 कहाँ है, सिर्फ यहाँ है। सो यू हैव फाइंड द आंसर करेक्टली। ट्रिपेनोसोमियासिस का क्या है, सेटसी फ्लाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, सी लाइकवाइज वन मोर मैचिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है आपको इंडस्ट्रियल एंजाइम विद इट्स एप्लीकेशन, लाइपेज, फाइकिन, अमाइलेज, ग्लूकोसाइडेज। सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। सो सी, इनमें से लाइपेज आपको पता होगा, अमाइलेज आपको फॉर श्योर पता होगा। सो लाइपेज इज नोन फॉर ऑयल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो पी का 2 किस में आंसर है, पी का 2 ये दोनों में है, यानी कि ए निकल गया और डी निकल गया। अब उसके बाद अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज विल प्रोड्यूस दी माल्टोज सिरप, ठीक है। तो आर का फर्स्ट होगा, तो आर का फर्स्ट किस में दिया है, दोनों में ही दिया है। नाउ ग्लूकोसाइडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओलिगोसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड प्रोडक्शन, राइट। सो एस का 3 किस में है, एस का 3 इसमें है। फाइकिन इज फॉर मीट टेंडराइजेशन, ठीक है, 4। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। सो इस तरह से आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मैंने सेपरेट बता दिए। वन मोर क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए हेलिकेज एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। सो चीट कोड में अपने लिख लो थर्ड या फोर्थ पॉइंट जो भी आप नंबरिंग कर रहे हो, दैट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन and for both prokaryote and eukaryote, all these are very very important. So you know that primase is what, primase is what, primase is nothing but the DNA dependent RNA synthesis. So P का होगा 4, ठीक है। P का 4 यहाँ दिया है और यहाँ दिया है, so ये कैंसिल हो गया एंड ये कैंसिल हो गया। नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज व्हाट, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस, यही करता है, ठीक है। आरएनए से डीएनए सिंथेसिस करता है, सो दिस वन इज द आंसर। नाउ आरएनए रेप्लिकेज का क्या फंक्शन है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, यही करता है आरएनए रेप्लिकेज एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि एस का क्या है 2 है, एस का 2 इसमें भी दिया था, लेकिन आर का क्या होना चाहिए, इसमें आर का 3 दिया है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, आर का फर्स्ट यहाँ है। सो नेक्स्ट राइट आंसर इज दिस वन, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन भी मैंडेटरीली आपको आएगा ही एग्जाम में। नाउ सी, वी आर हैविंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2, यूजेस पूछा है, ग्लूटामाइन, ट्रिप्सिन, हाइपोजेंथीन, नियोमाइसिन। So I know that most of you were already studied, like most of you are already aware with the plant biotechnology, right? So plant biotechnology is important because you have read all these terms like trypsin, glutamine, hypoxanthine, neomycin. So what is neomycin? So neomycin is used for the, like, it is a selectable marker. So selectable marker का रोल क्या होता है, सिलेक्शन करवाने का। सो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफेक्टेड मेमिलियन सेल लाइन्स, ठीक है, कि किसमें ट्रांसफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सो एस का 2, एस का 2 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है।
ठीक है, सो ये वाला है। नाउ सी, अब उसके बाद क्या आता है, हाइपोजेंथीन। सो वी नो दैट हाइपोजेंथीन इज अ component ऑफ द मीडियम फॉर सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमाइन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। तो ये इसमें आ गया आर का 4, आर का 4 यहाँ है। नाउ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज यूज टू डिटैचमेंट ऑफ द एडिहेरेंट सेल, इसलिए हम यूज करते हैं इसको। ग्लूटामाइन इज वर्ड सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन द कल्चर मीडिया। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। So this is all for the day. I hope you liked it. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe the channel.